Good morning, class 8. How are you? I hope you all are well. Please take out your SST book, chapter number 5, Civics, and page number 255. Yesterday we have started this chapter, and what we discussed yesterday about the judicial system of India and what is its structure and what are the hierarchy of Indian judicial system. So today we will study about Supreme Court of India, which is at the top of the hierarchy of the Indian judicial system. So let's start. Chapter 4 of the Constitution of India deals with the Union Judiciary. Chapter 4, Union Judiciary. Okay. Indian Constitution में जो chapter number 4 है, it deals with the Union Judiciary. Okay. यूनियन जुडिशरी से डील करता है, वो क्या करता है दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 जो कि डील करता है यूनियन जुडिशरी से, दैट प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट सिंस इट्स inception was empowered with jurisdiction far greater than that of any comparable court anywhere in the world. What is the meaning of inception? Inception means from its starting. Okay, so the Supreme Court since its starting was empowered. If you are comparing the Supreme Court to any other courts of the world, you can see that from its starting it is empowered. Okay, it is empowered far greater than that of any courts anywhere in the world. ठीक, वो अपने पावर को उसने बढ़ाया ही है, उसमें वो पावरफुल हुआ है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग. empowered means if in Hindi it is called सशक्तिकरण, मीन्स उसकी पावर में उसकी पावर बढ़ी है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस. कितनी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ होती है जजेस की? मैक्सिमम उसमें 34 जजेस हो सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस हु इज़ द रिपोजिटरी ऑफ ऑल जुडिशियल पावर्स ऑफ द नेशनल लेवल. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के नंबर्स होते हैं, इट इज़ मैक्सिमम इन नंबर इज़ 34, एंड इन इट चीफ जस्टिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, and who is the repository of all judicial power. What is the meaning of repository? If you're talking about a place, repository means a place where something is stored in large quantities. Okay, if you're talking about a place, but here we are talking about a person, and that is chief justice. So if you're talking about a person that has a lot of information, so repository means here a person means chief justice. He is the person who is having a lot of information of all judicial powers at the national level. The Supreme Court judge holds office until they reach the age of 65 years. The Supreme Court judges holds office until the age of 65 years. कब तक ये अब होल्ड कर सकते हैं, कब तक ये होल्ड करते हैं ऑफिस, मीन्स कब किस एज में ये रिटायर होते हैं? एट द एज ऑफ 65 ईयर्स. 65 ईयर्स तक ये एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे कैन डू देयर वर्क. सो क्या पढ़ा हमने अभी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 जो कि डील करता है यूनियन जुडिशरी से, और ये क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड और ये जो सुप्रीम कोर्ट अपनी स्टार्टिंग से ही इट इज़ एम्पावर्ड इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विद द अदर कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट, हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? 34 judges including the chief justice. And who is chief justice? Chief justice is a person, is a repository of all judicial powers. Okay, chief justice is a repository of all powers, all judicial powers at the national level, and they can do their work up to the age of 65 years. Understood?
let's move on. The Chief Justice of India, remaining other judges, make up the Supreme Court of India. Chief Justice of India and remaining other judges, what they make? They make the Supreme Court of India. The appointments are done directly by the President of India. Who is appointing the judges of the Supreme Court? President of India. He can directly appoint the judges of Supreme Court. But if he is directly appointing, the President of India is directly appointing the judges of the Supreme Court, so there should be some criteria, and there are certain, of course there are, so there are certain criteria that have to be fulfilled to become a judge of the Supreme Court. There should be there are some standardized rules of set of rules. Means criteria क्या होता है? Criteria is a standard set of rule, ठीक? So there are some standard set of rule or some criteria that should be fulfilled by the person who wants to be the judge of the Supreme Court. And what are these? Let's see. What are the criteria that should be fulfilled by the person who wants to be the judge of the Supreme Court? First of all, the person should be a citizen of India. Means if you're not the citizen of India, you cannot be the judge of the Supreme Court, of course. See? And so first criteria is the person should be a citizen of India. Second one, the person should have an experience of minimum 5 years as a judge in a high court or any other two courts, one after another. And if you are going to be the judge of Supreme Court, if you want to be the judge of Supreme Court, you should have an experience of minimum 5 years. Whether you have experience of 5 years in as a judge, okay, whether you have a experience of 5 years as a judge in high court or any other two courts, one after another. This is the second one, okay. This is the second criteria that you have to fulfill, that the person should be fulfilled. The third one is the person should also be a prominent jurist so that he or she can take up responsibilities well. Prominent jurist means expert in law, okay, because you are going to be the judge of the Supreme Court, and if you don't know how to apply the rules or laws, so there should be a problem. You cannot you cannot do your responsibilities well. So the person should also be a prominent jurist so that he or she can take up responsibilities well. What are these things? These were the criteria that should be fulfilled by the person who wants to be the judge of the Supreme Court. ये होते हैं क्राइटेरियाज जिसे आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक। अभी क्या है? द चीफ जस्टिस इज ऑल्सो कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. When the appointments of the Supreme Court judges are going on, the Chief Justice is also consulted. Okay, Chief Justice को भी consult किया जाता है इसके लिए at the time of appointment of the judges. And the judges of the Supreme Court are free to exercise their power as and when required. You know the power of the judges of the Supreme Court. They are free. They are free to exercise their power as and when required. They are free means, you know, the judicial system of India, it is an independent body, no one can interfere in it. We have already read about this. So the power of so the judges of the Supreme Court, they are also free to exercise their power, okay, as and when required. Then the process of removal of Supreme Court judge is quite an interesting but lengthy process called impeachment.
what we studied just now, क्या पढ़ा हमने अभी, just what we read about the appointment of the Supreme Court, about the appointment of the judges of the Supreme Court, कि उन्हें there are some criteria that should be fulfilled by them. Okay, but if you want to, if the president wants to remove the Supreme Court judges, it what is called, if the process, this process is called impeachment. What is impeachment? Impeachment is a process by which the judges of the Supreme Court removed. It is a very interesting but it is very lengthy process. बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, और जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड महाभियोग. ठीक. An order from the president is mandatory in case of removal of the judges. सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, सो देयर शुड बी एन ऑर्डर फ्रॉम द प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड इट इज़ मैंडेटरी in case of removal of the judges. And after that, not only this much, and after that, two-thirds majority has to be obtained from both the houses for the removal of the judges. Means there are two houses of in parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, so there should be two-third majority. If anyone is going to remove as the judge of the Supreme Court, so two-third majority has to be obtained from both the houses, okay, for the removal of the judges. Understood? कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? उन्हें डायरेक्टली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं, और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, द चीफ जस्टिस ऑल्सो कंसल्टेड फॉर दैट, and there are some criteria that should be fulfilled by the person who wants to be the judge of the Supreme Court. And the process of removal is also very interesting. So first of all, there should an order from the president is mandatory in case of removal, and the other thing is two-third majority of has to be obtained. Okay, two-third majority has to be obtained from both the houses. And the process of removal of the judges of the Supreme Court is called impeachment. Okay, let's move on. अभी हमने इनका अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, इनका रिमूवल पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के. अब हम पढ़ेंगे वो फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के. सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या है? The Supreme Court has been entrusted with many duties and responsibilities. Okay, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कौन कौन सी हैं? द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ that it is the highest court of appeal and is also the protector of the constitution in the country. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट की? दैट इज इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. ये अपील करने की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा था द हायरार्ची वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द टॉप, इट इज़ एट द एपेक्स. So it is the highest court of appeal and is also the protector of the constitution. When we started this chapter, we read it safeguards the fundamental rights and it upholds the provisions of the constitution. So here it is its responsibility that it is the protector of the constitution in the country. So इनके functions क्या हैं? Its function can be summarized as below. Let's see क्या है इनके functions. First, it interprets the constitution provisions and other laws. Interpret करता है क्या? जितनी भी constitution provisions और दूसरे laws हैं, it can interpret them. ठीक? Interpret, you know,
मीन्स इफ़ यू आस्क इन हिंदी इट इज़ व्याख्या. ओके, मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकता है. व्याख्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन अदर लॉज. देन एज अ फेडरल कोड, द सेकेंड वन इज as a federal court, it has exclusive jurisdiction to determine disputes between the Union of India and any states. As a federal court, it has exclusive jurisdiction to determine. jurisdiction means अपना इसका exclusive jurisdiction होता है किस लिए? To determine disputes, जो disputes Union of India and any states, यानी यूनियन ऑफ इंडिया और किसी स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए इसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो सेटल्स, दूसरी तरफ ये डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स भी सेटल करता है. यानी कि अगर किसी दो स्टेट्स के बीच कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी ये उसको सेटल करता है. मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया और एनी स्टेट्स के बीच इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एनी डिस्प्यूट, उसको भी उसके लिए उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है. और अगर किसी दो स्टेट्स के बीच भी कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो उसको भी सेटल करता है. अंडर आर्टिकल 32, देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32. ये क्या करता है? इट इशूज़ रिट्स और कोर्ट ऑर्डर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 32 जिसने एक रिट इशू किया है, मतलब इसमें एक रिट इशू होता है. रिट क्या है? कोर्ट ऑर्डर को कहते हैं. ठीक है. रिट्स और कोर्ट ऑर्डर, दे आर द सिनोनिम्स. रिट्स और कोर्ट ऑर्डर किस लिए? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो जो आर्टिकल 32 है ये एक रिट इशू करता है फॉर व्हाट? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक. फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. what are the fundamental rights? We have already discussed. सो आपने पहले भी पढ़ा था कि इट ऑल्सो सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स. सो हेयर इन आर्टिकल 32 इट इशूज़ रिट्स, ये रिट्स भी इशू करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. नाउ द थर्ड वन, as the highest court of appeal it could hear appeals from the state high courts on civil, criminal and constitutional matters. As you have already read that it is the highest court of appeal, so it could hear appeals from the state high courts also. इस कहाँ से ये अपील? स्टेट हाई कोर्ट्स की अपील भी ये हेयर करता है, इसकी हेयरिंग भी होती है वहाँ पे. ऑन व्हाट मैटर? ऑन सिविल मैटर, ऑन क्रिमिनल मैटर एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. क्लियर? क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसमें अपील करने की सबसे हाईएस्ट कोर्ट यही है. सो it can also hear appeals from the state high courts. The fourth and the last one is under article 136. हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 32. सॉरी. Under Article 136, the Supreme Court can also allow appeals from any tribunal or court. अभी तो ये it can also hear the appeals from the state high courts, but in under Article 136 it can also allow appeal from any tribunal or court. ठीक है. इसी ट्राइब्यूनल कोर्ट से भी और कोर्ट की भी ये अपील अलाउ कर सकता है, करता है. आपने पढ़ा था ना हायरार्ची में कि स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट्स होते हैं. ठीक. इट हैज़ एन अथॉरिटी. क्या किस तरह के कोर्ट्स होते हैं? स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स. स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स दे आर द कोर्ट्स which are having an authority to decide who is right in particular types of disputes. So thus it is a forum for the redressing of grievance for every grievance in the country which require judicial intervention.
sorry for the interruption. What we discuss, function of the Supreme Court. So we have already done first, second, and third point. So let's start point number 4. Under Article 136, the Supreme Court can also allow appeals from any tribunal or court. Yes, बताया मैंने आपको, under Article 136 the Supreme Court can also allow appeal from any tribunal or court. So क्या है? Thus it is a forum. Thus, it is a forum for the redressing of grievance for every grievance in the country which requires judicial intervention. So, ये क्या हुआ एक तरह से? It is like a forum for the redressing of grievance. What is the meaning of redressing and what is the meaning of grievance? Redressing means सेटल करना, किसी चीज़ का हल निकाल लेना, ठीक है. एंड इन हिंदी यू कैन से इट इज़ निवारण, मतलब सॉर्ट आउट कर, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना. ग्रीवेंस मीन्स कंप्लेन. ओके, सो ये क्या है? इट इज़ अ फोरम. इट एक्ट लाइक अ फोरम फॉर एनी काइंड ऑफ अपील, एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंस जिसमें किसकी ज़रूरत होती है? विच रिक्वायर्स जुडिशियल इंटरवेंशन, जिसमें जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ एक्ट एज अ फोरम फॉर दैट ग्रीवेंस. अंडरस्टूड? सो क्या पढ़ा अभी हमने? फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले क्या है? इट इंटरप्रेट्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और अदर लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करता है. दूसरा, ये क्या है? इसके लिए इसके पास एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है फॉर व्हाट? टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स. ठीक. एंड दूसरी चीज़ ये क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस स्टेट, इट ऑल्सो सेटल्स दोज. एंड अंडर आर्टिकल 32 क्या करता है? एक रिट इशू करता है जो कि दैट इन्फोर्समेंट for what? For the enforcement of the fundamental rights which is guaranteed by the Constitution of India. And as it is the highest court of appeal, it can also hear the appeals from the states high courts, okay, on different matters, on civils, criminals and constitutional matters. And the fourth one and the last one is under Article 136, it can also allow appeals from any tribunal or court, of course, because it is the highest court of appeal. So it act as a forum for the solving of any kind of problems which requires judicial involvement or intervention. I hope you understood about Supreme Court. So it's enough for today. Do one thing. You have to learn some point first, the criteria. Okay, what are the criteria that should be fulfilled to become a judge of Supreme Court, and what are the functions of the Supreme Court? These 2 points you have to learn. Okay, so thank you so much. Take care.